Hello everyone, welcome to another video. The topic of this video is pros and cons of a Fulbright scholarship. In the last video, I told you that the application of 2024 Fulbright scholarship is now open, and the final date to submit your application for Pakistan, of course, it is February 29th, 2024. इस वीडियो में मैं आपको Fulbright के pros और cons के बारे में बताऊंगा. So first, coming to pros, the number one pro for Fulbright is of course it's the fully funded scholarship. और fully funded का मतलब ये है कि अगर आप select होते हैं तो आपके TOEFL टेस्ट के जितना भी खर्चा होगा उससे लेकर आपके वीज़ा प्रोसेस के दौरान जितना भी खर्चा होगा, क्योंकि US का वीज़ा प्रोसेस it costs you because when I applied it used to cost like around $200, और उसके बाद आपका टिकट टू यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में आपके जो डिग्री है उसकी ट्यूशन फीस और उसके साथ साथ लिविंग स्टाइपेंड भी आपको दिया जाएगा. नाउ and after you will complete your degree, they will also give you a return ticket. So it's a fully fledged package. And if you are doing a PhD, they might sponsor you for a ticket to Pakistan even in the middle of your studies as well. So एक बार जाने का, दरम्यान में आने का, फिर दोबारा जाने का और फिर एंड पे वापस आने का, ये सब कवर्ड होगा स्कॉलरशिप के अंडर. इसके अलावा दूसरा एक और जो प्रो है वो ये है कि like I said in the first video as well, Fulbright is your chance to get into prestigious University of United States. As you know, Howard, your Georgia Tech, University of Michigan, Ann Arbor, Yale, Cornell, Columbia University, and there are so many of them, of course. So इनमें से कुछ हैं जिनमें Fulbright ज़्यादा लोगों को प्लेस करता है और कुछ हैं जिनमें इक्का दुक्का लोग ही पाकिस्तान से जाते हैं. But this is your chance to get into those universities because अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोफाइल शुड बी अ टॉप नॉच प्रोफाइल. GPA वाइज, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज, आपका ओवरऑल ऑरा, आपका पर्सनल स्टेटमेंट, आपका रिकमेंडेशन लेटर, दैट शुड ऑल बी top notch अगर if you want to make into the Ivy Leagues and applying directly, and of course that is costly as well while you are applying directly, because it's very rare to be funded 100% for I'm talking about masters here. और Fulbright में आपके पास चांस ये है कि जब आप सिलेक्ट होते हैं तो यू आर आस्क्ड टू स्पेसिफाई 4 different universities that you want them to place your application in. So you can specify very good universities as well as mid tier and low ranked university as well. So it's all up to you. मगर अगर आप कर देंगे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को स्पेसिफाई तो Fulbright आपके लिए अप्लाई कर देगा, और आगे जब कमेटी के बाद आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो दे वुड नो दैट यू आर ऑलरेडी फुली फंडेड बाय Fulbright. और IIE वो इदारा है जो यूनाइटेड स्टेट्स में Fulbright स्कॉलर्स को डील करता है. So they would know that you are fully funded and funding is out of the question here. So they will look at your profile. If it is not very exceptional but good enough, they will still let you in. So many students they just make it into top universities as well. उसके अलावा Fulbright में नेटवर्किंग का चांस बहुत ज़्यादा है. एज अ कोहोर्ट आप लोग जाते हैं, और नॉट ओनली द करंट कोहोर्ट बट ऑल्सो प्रीवियस कोहोर्ट के जो लोग हैं और आपके बाद जो आने वाले लोग होंगे उनसे आपकी जो है काफ़ी अलग सेलेक्ट हो जाती है, तो आपका नेटवर्क काफ़ी ग्रो करता है. और विद इन US भी Fulbright वालों की काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनमें आप एक दूसरे से मिल सकते हैं. और उसके अलावा इन पाकिस्तान व्हेन यू रिटर्न आफ्टर योर डिग्री, USEFP यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स को कंडक्ट करता है, तो एक तरह का वो भी एक प्रो ही है. अब कॉन्स की तरफ आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये स्कॉलरशिप विदाउट एनी कॉन्स है. सबसे पहला कॉन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में आपका वीज़ा होगा J1 टाइप. तो यहाँ तो देखने की बात यह है कि स्टूडेंट्स को मिलता है 2 तरह का वीज़ा, F1 और दूसरा J1. Fulbright पे आपको J1 मिलता है, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपको F1 मिलता है. J1 का ड्रॉबैक ये है कि J1 कैन नॉट कंटिन्यू जॉब देयर इन यूनाइटेड स्टेट्स. You have to return back to Pakistan, and for how many years? You have to be in Pakistan for 2 years until you apply again for United States. अगर आप यूरोप या कनाडा या किसी और यूनिवर्सिटी में या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, then there is no binding. They will not
दे विल नॉट सी कि आप J1 पे यूनाइटेड स्टेट्स में से यहाँ नहीं आ सकते, यू कैन गो एनीवेयर, बट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में B1 पे आप विजिट तो कर ही सकते हैं, बट टू कंटिन्यू योर करियर इन यूनाइटेड स्टेट्स यू कैन नॉट डू इट एट इन J1. Later on in your life you can, but you have to give the 2 years gap. And another con is like stipend level जो है Fulbright का, although it varies from city to city, because America, as you know, is a capitalist country, so some cities of America, they are way more expensive. For example, New York is way more expensive than some city or some town that is not that bigger deal, that not that bigger city. तो जो आपका रेंट होगा न्यूयॉर्क में फॉर एग्जांपल, उसमें आप पूरी अपने जो है ना महीने का सब कुछ करके सेविंग भी कर सकते हैं. कुछ दूसरे ऐसे इलाके होंगे जिनमें आप न्यूयॉर्क के रेंट के बराबर के पैसों में सब कुछ कर सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है. तो फुलब्राइट हैज़ दिस इन माइंड. तो स्टाइपेंड लेवल भी आपको डिफरेंट तरह के देता है, लेकिन स्टिल स्टाइपेंड लेवल आर नॉट अप टू द मार्क, और यू विल रियलाइज के इट्स वेरी हार्ड, especially if you are like married and taking your spouse or your children with you to United States. In that stipend, it is a big headache. So you have to give it a thought before you take your family there. If you are alone, you might manage it. And another con I would think of is dealing with IIE, as I told, is the institution that deals with the Fulbright scholars, and USCFP in Pakistan. It's a bit of pain in the ass because again, this is government. And you know how government institutions work, so sometimes it becomes very difficult. There are many delays and stuff like that. So in a nutshell, there are pros, there are cons. You have to consider all of them. मेरा अगर मैं टिप देना चाहूँ तो for master students, Fulbright is very very good scholarship. If you get it, you should avail it, because otherwise वहाँ से masters करना it's very expensive, and if you are from middle class background and if you can't get a loan from the bank or something like that, then it becomes very difficult to do a master's from United States. But if you are going for PhD, think again. You might want to apply directly, and direct admissions is way better than Fulbright. So yeah, see you again in the next video. Please do like the video and also subscribe to my channel.